दोस्तों, I welcome you to the CSAT 2024 Prelims. Here I will be solving very typical problems which will help you to solve such problems when asked in 2024 Prelims examination CSAT paper. And I am here solving those questions which are based on some concept, some tricks, and there are high chances that these kind of questions could be asked in upcoming examination. So let us start. Now what is given? What is the number of numbers of the form 0.xy where x and y are distinct non-zero digits? इसका मतलब 0.xy ये नंबर है, तो ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं अगर x और y नॉन ज़ीरो डिजिट्स है और वो भी डिस्टिंक्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स है. सो नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या हो सकते हैं? 1 2 3 राइट टिल 9. So 1 2 3 till 9. Now what is it saying? Where x and y are distinct non-zero digits, it means the values of x and y can take from 1 to 9. But x and y are not similar, they must be distinct. So x और y की वैल्यू इन 9 डिजिट्स में ही होगी, बट इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी एवरी टाइम. सो इसका मतलब 0.12 होगी या 0.21 होगी या 0.32 होगी, राइट, या 0.34 67 एट्सेट्रा. बट ये 0.11 नहीं होगी, 0.22 नहीं होगी, बिकॉज इट्स सेइंग दैट x and y are distinct non-zero digits. So how we will solve this problem? अगर हमें, और this is permutation based question, so let's say 0.x and y. मैं यहाँ x को I can choose value from these 9 digits. So I have 9 choices over here. और अगर इसमें से एक डिजिट ऑलरेडी x के प्लेस में चला गया है तो यहाँ बचेंगे 8. सो इन प्लेस ऑफ y आई हैव 8 चॉइसेस. या इसको आप डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हो कि y की वैल्यूज आप पहले चूज़ करो 1 to 9 में से, यू हैव 9 चॉइसेस. और ऑलरेडी इसमें से एक वैल्यू अगर y के प्लेस में चली गई, डिजिट एक y के प्लेस में चला गया, तो यू हैव 8 डिजिट्स रिमेनिंग. सो इन आइदर केस you will get the same answer. So 9 into 8, 72. So 72 has to be the answer of this question. I hope you understand this question, because you could be asked question like this: x, y, z, and if x and y and z are distinct non-zero digits, how will you calculate that? In this case, 9 into 8 into 7, right? But if it would have said ki x and y are non-zero digits, if you ignore this distinct, so x can take 9 values 1 to 9, and even y can also take 1 to 9 values, because same value can be in the place of y also, because it is not saying distinct, so it can be similar. So 1 to 9 you can utilize 9 over here, then again 1 to 9 you can utilize 9 over here, so 81. And in this case, if the distinct is not there and number is 0.xyz, then the answer would be 9 into 9 into 9. So you can calculate this, right? 81 into 9, 7 to 9. So I hope you got somehow how to solve this problem. All the best.